Hello, Mr. S. Shahu. Welcome to YourPedia. Let's start your snap interview on the control system for your BARC, Baba Atomic Research Center Scientific Officer interview preparation, right? Yes, sir. Yeah. Mr. Yes, tell me what you understood by the word pole. Sir, pole uh, is the when we define the transfer function. So when we find the roots of the denominator of the transfer function, that root indicates the pole of that transfer function, and the value of the transfer function at pole becomes infinity. Yes. What does it physically mean? Transfer function magnitude is infinity means what? What you understood by that? So at that frequency, the magnitude of that transfer function goes to infinity. Practically, is it possible magnitude of the transfer function to become infinite? And what does it mean by magnitude of transfer function is infinite? Transfer function is Laplace transform of output by Laplace transform of input, right? Yes, sir. Its magnitude for a finite amount of input, its magnitude is becoming infinite means what it is becoming infinite actually. Sorry, sir. Take one LC circuit, take one series LC circuit, and take Yes, voltage sir. across capacitor as output, and give input as some VA of S, input voltage. Get its transfer function, voltage across capacitor is your output, get its transfer function. What is the input, sir? Input for finding transfer function, you want input. Okay. Is it required input for finding transfer function? Output from the capacitor. Output is across the voltage across capacitor. Okay, sir. Sir. Just tell me orally. Orally, you tell me what you got transfer function. Sir. Sir, output is V in 1 minus cos omega naught t. Vs. No, I asked you transfer function, not the output voltage. No, without knowing the input, how can you find output? If I give you impulse input or step or ramp or parabolic, then you are able to find the output. But I did not given you any input. No. Now how you are able to find the output? I asked what is transfer function. Hello. Yeah, yes. Hello, sir. Yes. Thank you so much, sir. What is the transfer function you got? Sir, transfer function. Sir, 1 by SC upon my SL plus 1 by SC. Simplify it and find its pole, man. Yes. Simplify it, find its pole. The pole is plus minus 1 by under root LC. Suppose if I operate that circuit at omega equal to 1 by root LC frequency, then how much is the voltage across capacitor you are going to get? That particular frequency. If I operate that system at the pole frequency, S is pole. S is pole. S is equal to not S is pole. S is frequency. S is equal to plus or minus J by root LC you got, no? Yes, sir. S is equal to J omega. Omega equal to 1 by root LC. If I'm operating my system at that frequency,
then what happens physically in the circuit? Sir, its magnitude Then will be the amplitude of the sinusoidal. is that is not resonance condition? Yes, sir. During resonance condition, XL is going to become equal to XC. The circuit is becoming like short circuit. Then is it not current is going to become infinite? Come on, man. We started at a question. What happens if we operate the transfer function at pole frequency, at poles? You told mathematically it is infinite, sir. To explain you that one, to make you to understand that concept, I given you one circuit, LC circuit, right? Yes, sir. And I told you to take voltage across capacitor. What is VC of S? VC of S is equal to VA of S into 1 by CS plus LS plus 1 by CS, right? So VC of S by VA of S is equal to 1 by LCS square plus 1 you got, right? Yes, sir. Transfer function. Now, if you find it pole, you got S is equal to plus or minus J by root LC, right? Now, Yes, sir. if you take the magnitude of VC of S by VA of S at that S is equal to plus or minus J by root LC, you're getting at it as infinite mathematically. Then Yes, I'm sir. asking what happening in the circuit is my question. You have capacitor, you have inductor, then capacitance is 1 by CS, S is equal to J omega, but omega is nothing but 1 by root LC. Substitute it. Omega is nothing but J by 1 by root LC. Substitute it. S is equal to J omega, no? J by root LC, substitute it and do it. Then you explain it. Analyze it and explain it, man. You got my point, Sahu? Yes, sir. Sir, what would be the value of the output Yeah. at this frequency? And how it is becoming infinite? What it is really happening in circuit? I want. Sir, what should be the approach? I have no idea. Sahu, I already explained you. Listen, Sahu, carefully. Yes, sir. I given you LC circuit, no? Sir, I understand what the question is, but the I'll explain. approach. Listen, I'll explain. Yes. Inductance is LS, no? Yes, sir. S is nothing but J omega L into J by root LC, right? Yes, sir. And capacitance is 1 by CS, right? Yes, sir. 1 by C into J by root LC, right? Yes, sir. This root C gone. Now, if you clearly write, this is going to become, means what inductance is going to become? J into root of L by C is inductance, right? Yes, sir. Capacitance is minus J into root of L by C, right? Yes, sir. What are the units? Ohmic values, those are. LS is in ohms, C, 1 by CS is also in ohms, right? Yes, sir. Both the reactances are exactly equal and opposite, no? Yes, sir. Yes. Then what is the total reactance of the system? 0, right? Yes, sir. Then how much will be the current that is flowing? Current is infinite, right? Yes, sir. If current is infinite, what is the voltage across resist? What is the voltage across capacitor? Voltage across capacitor is equal to current through that IC into 1 by CS, no? Yes, sir. If current is infinite, voltage across capacitor is also heading towards infinite. That's the reason why voltage across capacitor will become infinite. Ideally, Yes, right? sir. Theoretically or ideally, right? But practically, if you operate that system at pole frequency, the circuit is becoming like short circuit. The circuit is behaving like short circuit due to which current is infinite. Current is infinite and circuit will damage. Right? Yes, sir. Now, can you draw? Please draw one circuit. Take a DC current source. Connect that one in series with a switch. Yes, sir. And connect with the ideal capacitor.
Yes. Tell me whether that system is stable or unstable. Sir, it is stable. How can you say it is stable? Sir, region is the voltage across the capacitor is constant. So Is it the constant? Is it? I given you a DC current source, voltage across capacitor is VC is equal to 1 by C integral I of t dt, where I is constant. So you're going, I is suppose take some 5 amperes. So you're going to get 5 by C into T. As T is increasing, voltage across capacitor keep on increasing. After some time, capacitor will damage. I repeat, yes, sir. find voltage across capacitor formula for DC current. For ideal capacitor. Yeah, I give an ideal capacitor only, na. Yes, I sir. want voltage across capacitor formula for DC input current. Sir, 1 by C integral of IC dt. Okay, how much is IC? IC is a constant. Then find it. Do its integration, get the final product. Okay, sir. Sir, IC T by C. IC T by C. What is that T? T is the ramp time period. Ramp time period. Come on, yeah. Did I give a ramp So, period? sorry, sir. Period means increase These in are time. general time. Suppose if you Yes, sir. put switch at T is equal to 0 and you are opening the switch at T is equal to 10, that T will be 10, right? Yes, sir. Yes, sir. Now, Time if period. you make that switch close forever, if you draw the graph of that voltage across capacitor is increasing linearly, no, as a Yes, straight sir. line. Yes, sir. No, it is bounded or unbounded voltage across capacitor. Yes, it is unbounded. What is the input given by you? Current, Input is constant current, which is bounded, right? constant. Yes, constant current. You given bounded input, but you're getting unbounded output. Does that Yes, system sir. not unstable? Yes, sir. It is unstable. Come on, Sahu. You have a decent rank in gate, very good rank in gate. सर वो डीसी वोल्टेज सोर्स बना दिया था मैंने मतलब सोर्स डीसी साइड वोल्टेज में. सोर्स बना दिया है मैंने पहले से ही बोल रहा था डीसी करंट सोर्स लेना है बोल के. सॉरी सर. Okay, take one series RLC circuit. Yes, sir. I want to know whether that RLC all are positive. You know that resistance, inductance, and capacitance are always positive values. Yes, sir. I want to know whether that circuit is stable or unstable. How to find? I'm giving bounded input. I can take in any output. I can take voltage across resistor. I can take voltage across inductor. I can take voltage across capacitor. I may take current in the circuit, or I may take charge in the capacitor. I may take flux in the inductor. Any of the variable I can take as my output. I want to know whether that system is stable or unstable for a bounded input. How to find the stability? Sahu, you know answer for every question, but आपका सोचा ही थोड़ा change करो. You can understand Hindi, right? Yes, sir. Yeah, I know that you know every answer. ठीक है. तो थोड़ा आप सोचने की तरीका, क्योंकि इंटरव्यू में अलग रहता है सोचने की तरीका. एग्जाम अलग है, इंटरव्यू अलग है. Yes, sir. इसमें सर तो दिक्कत ये भी हो जाती है कि समझ में नहीं आते क्वेश्चन क्या नहीं पूछा नहीं, जा रहा है आप मतलब क्या है सही ना, तरीके से. मेंटल ब्लॉक रख रहे हो, मतलब कुछ कुछ नया पूछ रहे हैं सर, ऐसा आप यू आर ब्लॉकिंग यूर सेल्फ. देखिए,
आपको यस सर। स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आर एच स्टेटर यूज करते हैं। आर एच स्टेटर लेके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो कोई भी एक आउटपुट ले लो, वेरिएबल आउटपुट ले लो, ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा, आर एच स्टेटर अप्लाई करो दो, बस आ जाएगा आपको। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है यस कि सर। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स आर ऑलवेज स्टेबल, नो। See, the constraint or stability will start from third order. First and second order systems are always stable if ऑलवेज the स्टेबल। conditions are satisfied. तो उसमें यस। करने क्या है, नेसेसरी कंडीशन इज ऑलरेडी साटिस्फाइड। मैंने यस। इसलिए स्ट्रेस किया था आरएलसी आर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आरएलसी पॉजिटिव है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू एस प्लस वन बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। दैट इज यस, ऑलवेज स्टेबल। नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। वो आर एच सब ऑलवेज ऑलवेज स्टेबल है। हो गया बस, उसमें करने की कोई कुछ है क्या। आप थोड़ा घबरा रहे हैं, यू आर टेकिंग टेंशन, डोंट बी दैट सीरियस, ओके, इन्वॉल्व करो। यस। व्हाट इज ऑन ऑफ कंट्रोलर? ऑन ऑफ कंट्रोलर। या ऑन ऑफ कंट्रोलर। सर, सर ये वर्ड पहली बार सुना है सर। ऑन ऑफ कंट्रोलर मींस यही कंट्रोलर। नहीं सुना है ऑन ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। व्हाट इज अ कंट्रोलर, फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज अ कंट्रोलर, एनी कंट्रोलर। Sir, controller is basically the control system which helps to change the parameter, time domain parameters पैरामीटर्स इज of गोइंग टू चेंज और uh, कैरेक्टरिस्टिक्स। yes sir, time dependent time domain parameters or So characteristics. what is the difference between parameters, characteristics and variables? You heard three words, right? Yes sir. One is parameters, another one is characteristics, another one is variables. What are the variables, parameters and characteristics? Can you distinguish these three? Sir, parameters are the constant values or the values which uh, defines the system. Suppose if I have a series RLC circuit, for example, what are the parameters of that series RLC circuit? Sir, parameter are RLC. Okay. What are the variables? Variables like input and sorry, output. Mm-hmm. Then what are the characteristics? Characteristics are the plot between output and input. That is transfer function. टाइम रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े होंगे ना, राइज टाइम, डिले टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम। Yes sir. वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, कंट्रोलर इज a circuit or a system which we add to an existing system if we want some modifications in the either time response characteristics or frequency response characteristics, right? Sir, both time and frequency both. See, कंट्रोलर कॉम्पनसेटर्स तो सेम ही होता है, Yes sir. ठीक है। देखो, कंट्रोलर्स बना रहता है एक्टिव एलिमेंट से। कंट्रोलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके कंट्रोलर बनाते हैं। पैसिव एलिमेंट खाली पैसिव एलिमेंट्स यूज किया तो आपको लैग कंट्रोल, लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर, ये लीड लैग कंपनसेटर मिलता है। पीआईडी कंट्रोलर इज सिमिलर टू लीड लैग कंपनसेटर। P Yes sir. PI is same as that of lag compensator. PD is same as that of lead, Lead right? compensator. लेकिन अगर आपको एक पोल ऑरिजिन पे ऐड करना है तो पीआई करेगा, लेकिन लैग ऑरिजिन पे पोल ऐड नहीं कर सकता, खाली पोल ऐड नहीं कर सकता, वही ऑरिजिन पे नहीं कर सकता। एक पोल एक जीरो ऐड करता करता है, वो पोल ऑरिजिन के आसपास में होता है, ठीक है। कंट्रोलर कॉम्पनसेटर्स का सेम ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस हैं। कंट्रोलर्स आर मेड अप ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन, लेकिन कॉम्पनसेटर्स आर मेड अप ऑफ ओनली पैसिव एलिमेंट्स। Mostly we use compensator for the improvement of frequency response characteristics like gain margin, phase margin. Yes sir. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एक कंपनसेटर को लेके जाके टाइम रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल रहे हो एग्जिस्टिंग सिस्टम में तो राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम, पीक, ये तो चेंज ही हो जाएगा ना, पक्का चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? देखो, आपका रेजिस्टेंस अभी 2 ओम्स है और एक रेजिस्टेंस लगा है, खाली रेजिस्टेंस के बारे में सोचते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो जीटा चेंज हो जाएगा, अगर जीटा Yes sir. चेंज हो जाएगा तो एमपी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? Yes. तो राइस टाइम क्या है, पाई माइनस थीटा पे ओमेगा डी, ओमेगा डी इज व्हाट, ओमेगा इन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। हर कुछ चेंज हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि ओनली कॉम्पनसेटर्स टू इंप्रूव फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कंट्रोलर्स टू इंप्रूव ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, टाइम रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों कर सकता है, लेकिन द बेस्ट पॉसिबल वे इज
controllers are used to improve time response characteristics. Compensators are used to improve frequency response characteristics. frequency. See, I have an air conditioner. I want you to draw the block diagram of air conditioner and how it is working. Can you explain? Air conditioner. Basic. See, I don't want what is the input to the air conditioner, what is the output you are getting. If temperature is changing, if in your room the temperature is changing, you set the temperature with the remote as 25, then it's your air conditioner responsibility to change that room temperature, any temperature, to 25, right? How it is happening? You know the basic working principle of air conditioner? Not that mechanical wala working principle. Generally, what air conditioner is doing, your air conditioner is there, or you draw the block diagram of lift, the one which takes us up down in a building, one floor to another floor in a building. उसका ब्लॉक डायग्राम बनाओ, नहीं तो ये एयर कंडीशनर का ब्लॉक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो कैसा काम करता है. It's senses the temperature, which helps to पहले ड्रा करो, reduce. पूरा ड्रा करो. इनपुट क्या है, सिस्टम क्या है, कंट्रोलर कहाँ पे रखा है, कौन सा फीडबैक लिया है, फीडबैक में क्या रखे हैं आपने, ठीक है, कौन कौन सा सेंसर्स कहाँ पे लगाए हैं, तो ये ड्रा करो. साहू, Yes, sir. can you show it to me? It is not visible to me. I think you made your background blur. That's why. सर बता देता हूँ सर. आप बता दो. सर इनपुट में जैसे सिग्नल रिमोट से गया है, तो वो डिजायर्ड एयर टेम्परेचर है वो इनपुट, और फिर उसके बाद समर है जो कि इनपुट तो ये ले रहा है, और साथ में सेंसर से जो आउटपुट आ रहा है, और वो सेंसर में जो पूरे ट्रांसफर फंक्शन का जो आउटपुट है वो मॉडिफाइड टेम्परेचर का इनपुट सेंसर में गया है, और सेंसर से वही शुरुआत वाली जो समर है उसके अंदर इनपुट में नेगेटिव फीडबैक के तौर पे आ रहा है. तो फिर ये जो डिफरेंस है वो कंट्रोलर में जाकर फिर मेन ट्रांसफर फंक्शन के अंदर गया. तो मेन ट्रांसफर फंक्शन में होता क्या है? मेन सिस्टम में कंट्रोलर के बाद क्या लगाया? देखिए मैं बताता हूँ. कंट्रोलर के बाद इनपुट है, एक कंपोनेंट है, उसके बाद कंट्रोलर है, उसके बाद क्या लगाया आपने? एक्चुअली एसी लगाना है ना वहां पे, द वन विच इज रियली कूलिंग योर रूम और मेकिंग हॉट योर रूम, राइट? उसका आउटपुट आ जाएगा. तो वो वाला आउटपुट फीडबैक में ले रहा है. फीडबैक में यू आर पुटिंग वन ट्रांसड्यूसर, क्योंकि आउटपुट तो टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके, ठीक है, कन्वर्ट करके ये कंपैरेटर को देना है. तो वो जो डिफरेंस होता है वो फिर कंट्रोलर में जाएगा, है कि नहीं? यस. या साहू. यस सर. जो ट्रांसड्यूसर से इनपुट उसने लिया है टेम्परेचर का, तो वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसको इनपुट ठीक के है, तौर पे. समझ गए साहू. मैं लेट मी गिव यू फीडबैक. आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप राइट डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे हैं. तो इसके लिए क्या करना है? जितना ज्यादा आप फैकल्टी को स्नैप देते हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? यस कौन आप इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से? सर. इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल. तो कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं? सर इलेक्ट्रिकल मशीन, कंट्रोल सिस्टम एंड नेटवर्क एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है. तो आप ना फैकल्टी से ज्यादा इंटरेक्ट करने की ट्राई करो. यस सर. ठीक है. आपके पास टाइम भी है, और प्रीवियस का स्नैप्स पड़ा रहता है, स्नैप्स मॉक्स यूरोपीडिया पैनल पे, एक बार वो भी गो थ्रू कर लेना. क्वेश्चन यस. कैसे पूछ रहा है, हमको कैसे सोचना है, ज्यादा वर्कआउट करो आप, ठीक है? यस. सोचाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दे दो.
नॉट द आंसर, आंसर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, योर अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सर अच्छा इस तरह आपका। के जो क्वेश्चन है एयर कंडीशनर और जैसे लिफ्ट के आप पूछ रहे हैं, तो ये ये इसके क्वेश्चन थोड़ा मतलब इसके सोचने के लिए लिए। कुछ नहीं चाहिए, बस खाली इतना ही माइंड में रखो कि मुझे अभी बाहर का टेम्परेचर 30 है, लेकिन मुझे यस 25 चाहिए। अभी आउटपुट क्या है, 30 है, इनपुट यस मैं 25 देता हूँ, तो मेरा आउटपुट भी 25 में आना है, तो नेगेटिव फीडबैक लगाओ। तो ये 25 30 ये कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर विल वर्क, कंट्रोलर विल डू कंट्रोल सिग्नल टू एसी, एसी विल रिड्यूस द टेम्परेचर। 30 आया 27 तक, फिर 27 इज कंपेयर टू 25, -2 इज द एरर, वो कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोल विल यस यूज सर कंट्रोल सिग्नल टू। तो अभी टेम्परेचर 25 में आ गया, तब क्या करेगा, फर्दर द योर सिस्टम विल नॉट वर्क। अगर नहीं काम कर रहा है तो फिर टेम्परेचर राइज होगा, तो फिर फीडबैक जाएगा, तो इट कीप ऑन हैपनिंग दिस थिंग। तो इसके यस लिए आप ना उस डायरेक्शन में नहीं सोचना कि मुझे एसी के बारे में कुछ नहीं था, कुछ नहीं पता उसमें क्या क्या रहता है, ये नहीं, ये किसी को नहीं चाहिए। यू थिंक इन कंट्रोल सिस्टम परस्पेक्टिव, राइट? यस ओके, फाइन। सर और जो पोल का आपने क्वेश्चन पूछा था वो Pole is a मैग्नेटिक। frequency, pole is S is nothing but frequency. Poles are the frequencies of the system. System are natural frequencies at which you should not operate your system. If you operate at that frequency, then your system will damage. Okay? That's why I take, मैंने आपको एलसी सर्किट एग्जांपल दिया ना, एलसी सर्किट एग्जांपल देके एस इज इक्वल टू प्लस आर माइनस जे बाई रूट एल सी आया, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा होता, ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी होता, राइट? वो वाला फ्रीक्वेंसी पे आप सर्किट को ऑपरेट नहीं करने का। अगर करने से ये वाला सर्किट तो शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होने से करंट इन्फाइनाइट होता, करंट इन्फाइनाइट हो गया तो करंट इन्फाइनाइट होने से पहले ही आपका सिस्टम डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपने इंडक्टर खरीदा, वो वाला इंडक्टर का मैक्सिमम करंट विथस्टैंडिंग कैपेसिटी 20 एम्पियर्स। अगर इन्फाइनाइट होना मतलब 20 क्रॉस करना है ना, अगर 20 क्रॉस हो गया तो इंडक्टर डैमेज हो जाएगा ना। यस समझ रहे हो? प्रैक्टिकली। यस।